Namaskar, hello and welcome. You're watching Sansad TV. I'm Tina Jha with House Highlights. I'll be taking you through proceedings in both Houses of Parliament. Let's begin with the headlines. Discussion on motion of thanks to the President's address continues in both Houses of Parliament. Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, targets the government on the issue of unemployment and inflation. In the debate in Rajya Sabha, BJD's Prasanna Acharya appreciates the government's decision to start Republic Day celebrations from Netaji's birth anniversary. During question hour in Lok Sabha, ministers respond to queries on the integrated child development scheme, concerns on privacy and data security in chip-embedded e-passports. And in private members' business, bills move to insert the word ahimsa in preamble to the Constitution. Repeal some enactments related to labour sector moved in the Rajya Sabha. The upper house took up the discussion on the motion of thanks to the President's address for the third day on Friday. BJD's Prasanna Acharya appreciated the government's nationalistic approach. He noted that the government has taken the right decision to start Republic Day celebrations from Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary. While CPIM MP K. Soma Prasad pointed out deficiencies in the government's handling of the pandemic, he said the government had not provided any security incentives and insurances to the frontline workers. Listening. This government has very rightly taken a decision. I therefore compliment the Honorable Prime Minister that the Republic Day celebration will start from the birthday of Netaji, that is 23rd of January every month. It is a very, very welcome decision this government has taken. So another very important decision and very impressive decision this government has taken to observe Bir Bal Divas on 26th December in the memory of sacrifice of Sahib Dazad, the son of the 10th Guru Govind Singh, for their unparalleled sacrifice during the Muslim era. Sir, let me permit to record my reservations, disappointments, regret about the presidential address. Sir, when the Honorable President spoke about the handling of pandemic, he became eloquent. But we know the central government was an utter failure in handling the situation. Sir, how could we forget the floating dead bodies in the river Ganga? How could we forget the died innocent children and patients without getting oxygen and treatment at the proper time? How could we forget the long queue of the dead bodies in the crematoriums? The President praised the frontline workers of the pandemic. But what the government did for them? Had the government provided any security, any protection, any insurance facilities to their life, any incentive? Nothing, sir. Sir, when we go through each and every performance of the government, especially in the pandemic period, the government did not act properly. The government was utilizing the pandemic situation to implement its anti-people policies over them. उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार हैं। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है और मैं उम्मीद करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग नेशंस कैन ओनली बी बिल्ट जहाँ हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज़ का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं
तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। सन 50 से लेके अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को। कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई, क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर जय हिंद। Moving on, many private members' bills were also introduced in the upper house. BJD's Amar Patnaik moved a private member's bill to amend the preamble to the constitution to insert the word ahimsa. Dr. Amar Patnaik, the Constitution Amendment Bill 2020, Amendment of Preamble and Article 51A. Dr. Amar Patnaik to move for leave to introduce the Constitution Amendment Bill 2020. So I, Dr. Amar Patnaik, move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India for insertion of the word ahimsa in the preamble to the Constitution. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Dr. Amar Patnaik, please. I introduce the bill. Elamaram Karim moved a bill to repeal some enactments related to the labour sector. The Labour Codes Repeal Bill 2021, Sri Elamaram Karim ji to move for leave to introduce the Labour Codes Repeal Bill 2021. Sir, I move to leave to introduce a bill to repeal certain enactment related to Labour Code. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Elamaram Karim ji. I introduce the bill. Shanta Chetri introduced a bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in West Bengal to offer professional sports training and also promote various kinds of sports in the state. I, Srimati Shanta Chetri, to move for leave to introduce the bill to establish and incorporate the Darjeeling Sports University in the state of West Bengal. Thank you, sir. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Srimati Shanta Chetri ji. Yes, sir. I introduce the bill. In his response to a query during question hour in the Rajya Sabha, Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar assured the upper house that the government is committed to form a committee on MSP as Prime Minister Narendra Modi had announced. MSP के बारे में एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी इसका निर्णय करेगी किसानों के साथ किस प्रकार से इंसाफ हो। लेकिन क्या मैं जानना चाहूँगा उस कमेटी का रूप क्या है और उस कमेटी में कितने लोग शामिल किए गए हैं और कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। धन्यवाद। सारे देश के ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है
कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। Member Sushil Modi sought to know the action taken against bully bike creators. Information and Technology Minister Ashwini Vaishnav said that if all sides concur, the government is willing to provide even stricter social media rules. He also stressed that protecting women is a priority for the government irrespective of religion. Listen in. माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या बात सही है कि आईटी डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम to form a high-level committee to investigate complaints that a few websites had hosted doctored lewd pictures and objectionable comments aimed at insulting and auctioning Muslim women. तो ऐसे वेबसाइट्स के खिलाफ में या वैसे लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की सरकार ने, यह मैं जानना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत ही संवेदना वाला विषय है और महिलाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये हमारे लिए एक फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट है। किसी भी तरीके से इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसमें कोई भी रिलीजन, आप सुनिए ना प्लीज़, कोई रिलीजन की बात नहीं है, कोई क्षेत्र की बात नहीं है। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से ये हमारा कमिटमेंट है। जितने भी अभी तक पॉइंट आए उन सब पॉइंट्स पे तुरंत कार्रवाई की गई है। एक जितनी हमारी जानकारी के हिसाब से आते ही उस पर कार्रवाई की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन में रखना चाहूँगा माननीय सभापति जी। हम जब भी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया को अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर आरोप हमारे साथी लगाते हैं विपक्ष के कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहीं ना कहीं उसके ऊपर आहत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सोसाइटी में एक बैलेंस लाना ही पड़ेगा, एक कंसेंसस लाना ही पड़ेगा कि जो हमारे भविष्य के नौजवानों के, हमारी महिला, हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए जो करना है, अकाउंटेबल सोशल मीडिया को करना ही पड़ेगा। उसको अगर सेफ रखना है तो उसको उन नियमों को और ताकत देनी ही पड़ेगी। उसके लिए हमें अगर हमारे ऊपर अगर आप ये आरोप लगाएंगे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को तोड़ रहे हो, वो रोक रहे हो, तो वो गलत आरोप है। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें सब मिलके हमें एक नई दिशा में जाना होगा। धन्यवाद। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assured the upper house that India is on track to achieve the $400 billion export target in the current fiscal. He also said that the government is committed to making India a global manufacturing hub. So I would like to ask the Honorable Minister that despite a long-standing demand to lessen trade deficit, there has been a decline in budget on export promotion schemes. How does the government plan to solve this problem with particular reference to Rajasthan industry? I think it's a very good question, but I have been on record on more than one occasion to say that no country in the world can survive beyond a point of time only on clutches when it comes to export promotion. And while Honorable MP feels that we have reduced our export subsidies, the reality is this year India is going to see a record performance in exports. We have already, up to 31st March, crossed $334 billion of exports, which is higher than any full year ever in the past. And we are well on track to go to $400 billion export in the current year. My compliments to all the exporters, all the industry participants, including from the state of Rajasthan, who have contributed in a big way. I would urge all the states to support economic activity through exports, because truly export promotion is the way by which we'll be able to get more and more jobs in the system, more and more economic activity. I think it is the collective effort of the center and the states, and we are finding very good traction across the country working together. Thank you. So these were issues taken up during the question hour. Talking now about the 0 hour in the upper house, 14 0-hour submissions were taken up in the upper house on Friday. ये देखा गया है कि I am not going to allow autocracy in the house. Please go to your seats. सहायता करोड़ों में भी है और 5 लाख भी है। इसको मैं आपके माध्यम से दरखास्त करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से कि कम 1 करोड़ करें
और आश्रितों को नौकरी उनकी योग्यता के मुताबिक और जिस पोस्ट से शहीद हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि कुछ स्टेट्स में तो क्लास 1 जॉब दी जाती है और कुछ में दी ही नहीं जाती। इससे शहीद जो प्राइम ऑफ लाइफ में बलिदान होते हैं उनका परिवार अनसेटल्ड होता है। ऐसे हालात में उनको लमसम आर्थिक सहायता और साथ में नौकरी की सहायता उनके आश्रितों को बहुत जरूरी है। These might be revised for small states, especially the whole northeast state, in the existing ratio of 90:10 for all components under Samagra Shiksha scheme. Moreover, sir, the condition of appointment of teachers under Samagra Shiksha scheme may be revised at par with their counterparts under the state government, as they are the most important components for achieving desired quality education in the country. More funds may be allocated for enhancement of salary components under the scheme. Knowing Hindi for the children of Northeast is very important for national integration. Unfortunately, this year the FCI has refused to receive any parboiled rice in the current year 21-22. Target has been issued to lift only 5 lakh metric ton of forfeited parboiled rice and 2 lakh metric ton of raw rice. As a result, sir, Orissa will be left with 15 lakh metric ton of surplus rice. So what should we do with that rice? Should we throw it to the Bay of Bengal, sir? I request the minister to kindly consider and ask the Food Corporation of India to lift all the surplus parboiled rice from Orissa. Sir. Time for a short break here. We'll be right back. Do stay with us. Welcome back. You're watching House Highlights. On the third day of the discussion on the motion of thanks to the President's address, Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, targeted the government on the issues of unemployment and inflation. While BJP MP Kirit Prembhai Solanki listed the achievements of the government, he said the policies and decisions are aimed at ensuring the welfare of people. Listen. बेकार नौजवान, बेरोजगार नौजवान कहता है मोदी जी मुझे लौटा दे बीते बुरे दिन। अब किधर जाओगे? अब महंगाई को देखिए, महंगाई को देखिए। अब चौंक जाओगे प्रधानमंत्री जी। ये क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 2014 साल में 1 लीटर पेट्रोल की 68 रुपया दाम था, आज 110 पर लीटर। कितना फीसद बढ़ोतरी हुई है? 62%। डीजल 57 पर लीटर थे, आज बढ़ के चले गए 95 पर लीटर, 67% इजाफा। एलपीजी सिलेंडर 414 पर सिलेंडर, अभी 900 पर सिलेंडर, 117 गुण इजाफा। टमाटो 18 2014 में, अभी 84% इजाफा। कैप्सिकम 33 रुपया थी, अभी 72 रुपया, 118% इजाफा। कहां जाएंगे हम लोग? कहां जाएंगे यहाँ के आम जनता? मस्टर्ड ऑयल से लेके कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, वनस्पति, तूर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, गरम दाल, हर जगह दाम में जिस तरह की इजाफा होते हैं, आम लोग भी कहने लगे हैं मोदी जी लौटा दे मेरे बीते बुरे दिन। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर बोझ क्यों डालते हैं? मोदी जी हिंदुस्तान दो हिस्से में बांटे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी इसलिए कहा था कि अमीर और गरीबी में फर्क बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप एक कार खरीदते हैं जिसका दाम होता है 15 करोड़। आप एक प्लेन खरीदते हैं जिसका दाम होता है 4,500 करोड़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बेकार नौजवान रास्ते में भटकते हुए आत्महत्या कर रहे हैं? हमारे भटकते नौजवान दिन रात रास्ते में भटकते हुए माँ बाप की गाली खाते हैं, आपको नहीं पता चलेगी। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम आजादी के अमृत काल से हम गुजर रहे हैं और हमारे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस देश को हमें किस गति को ले जाना है,
इस देश को हमें किस दिशा में ले जाना है, इसके लिए संकल्प किया है। और उनकी सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा जो लिए गए हैं, वो इस देश को विकास की ओर ले जाने के लिए, इस देश को सशक्त करने के लिए, इस देश को और मजबूती प्रदान करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं पिछले 8 साल में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं। सरकार जो आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फैसला लिया, उसमें ऐसा उनका मंशा है कि हम आजादी के आने वाले जो आज 75 साल पर खड़े हैं, तो आजादी के आने वाले 25 साल में हम कैसा भारत का निर्माण करना चाहता है, हम कैसा भारत को बनाना चाहता है, उसके लिए ये काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का धन्यवाद इसके लिए भी करता हूं कि उन्होंने इस देश की बुनियाद को जो बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, वो बहुत ही सशक्त कार्य किया है। आईसीयू वार्ड के अभाव में भी हजारों जानें इस देश के अंदर गई थी। तो संविधान और आरक्षण और दलित अत्याचार के संबंध में बिंदु संख्या 14 में राष्ट्रपति ने संविधान के शिल्पी बाबा डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, उनके आदर्शों का जिक्र तो किया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना नहीं है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में, इसलिए सरकारी नौकरियों में कटौती का मतलब आरक्षण का कमजोर होना भी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार वंचित वर्गों के साथ अन्याय करी है। अगर हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखकर कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां इसके होने या नहीं होने में खास अंतर नहीं रह जाएगा। सवज महोदय, अभिभाषण में स्वाधीनता, सम्मान तथा भाईचारे का जिक्र किया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि देश के उत्तर प्रदेश, बिहार और मेरे राजस्थान राज्य में दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वे चिंताजनक है। Talking about the private members bill in Lok Sabha, Bhartrahari Mehtab introduced 2 private members bills. These were the Constitution Amendment Bill 2021 to further amend the Constitution of India, the Prevention of Acid Attacks and Rehabilitation of Acid Attack Victims Bill 2021 to provide for prevention of acid attacks and also rehabilitation of women victims of acid attacks. Varun Gandhi introduced the Prevention of Bribery of Foreign Public Officials and Officials of Public International Organizations Bill 2019 to prevent corruption relating to bribery of foreign public officials and officials of public international organizations as well. Member Rama Devi introduced the Women Development and Welfare Authority Bill 2021 to constitute the Women Development and Welfare Authority to formulate schemes and recommend measures for women empowerment. Lok Sabha Speaker Om Birla raised concerns over the conduct of some members who targeted the chair through their unwarranted remarks on social media. Addressing the House on Friday, the Speaker said the comments regarding the chair, both inside and outside the House, violated the dignity as well as decorum of the House. Members Adhir Ranjan Chaudhary, A. Raja, Farooq Abdullah, Arvind Sawant and others echoed the sentiments raised by the Speaker. मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप यहाँ के सदस्य हैं, कभी आसन से आपकी कुछ तकरार हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, आप मुझे चेंबर में आकर बता सकते हैं, वहाँ मैं आपकी बात सुनूंगा। ये चेंबर भी आसन पीठ का ही एक हिस्सा है। मैं सभी मान्य सदस्यों का हमेशा सम्मान करता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि उनको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। कभी मुझे नहीं लगता कि किसी दल के नेता ने ये आपत्ति की होगी हमें समय कम मिलता है। आवंटित समय से भी ज़्यादा समय मैं देता हूँ और प्रयास करता हूँ कि ये सदन सबका है, सबको बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका मिले। आपको भी इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आप भी देर रात तक इस ठिठुरती ठंड के अंदर भी संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए देर रात तक सदन में बैठते हैं। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर आप उचित समझते हैं तो एक मर्यादा हमें बनानी चाहिए और इस मर्यादा के सब पालन करें।
एक माननीय सदस्य ने मुझे लिख कर दिया है कि जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो माननीय सदस्य उसके सामने से गुजरते हैं, वीडियो क्लिपिंग पे आती है। ये एक हमारी नियम प्रक्रिया के अंदर कुछ चीज़ें हमने सबने तय की है, इसलिए जितनी सदन की मर्यादा बनी रहेगी, हमारे पूर्वोत्तर अध्यक्षों ने और पूर्वोत्तर सभी माननीय सदस्यों ने इस आसन की गंभीरता को, यहाँ की मर्यादा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। इसलिए हम विश्व में कह सकते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मैं चाहूँगा कि कोई भी माननीय सदस्य हो, व्यक्तिगत रूप से भी मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बात करता हूँ। मेरे सदस्य हैं, उनकी मर्यादा बनी रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रही है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। Moving on, during question hour in the Lok Sabha, members sought the government's response on various issues of public importance, including the Integrated Child Development Scheme. Independent MP from Mandya constituency in Karnataka, Suman Lata Ambarish, raised the issue of poor quality of food and water and also lack of separate kitchens for children. Congress MP M.K. Raghavan voiced concern over the chip-based e-passport. The MP from Kozhikode asked about measures being taken to ensure the data security of Indian citizens who will be issued e-passports. Listen in. Proper lack of storage facility, non-availability of separate kitchens, inadequate and irregular supply of food rations and poor quality of food, as well as fuel problems. I want to know from the Honourable Minister, what kind of measures is the government taking to address these problems? Today, as a part of the Government of India's efforts, we have ensured convergence of 18 ministries under the Poshan Abhiyan. The Honourable Member has enunciated her angst with regards to infrastructure challenges such as water, toilets or storage spaces. I would like to bring to the attention of the Honourable Member that with regards to infrastructural challenges as well, the Government of India under the aegis of the Secretary of Women and Child Development Ministry does engage regularly with our State Department representatives so that these infrastructural challenges can be adequately met, not only through capital expenditure but also convergence of efforts such as under programs like Manrega. What measures have been taken to ensure data security of Indian citizens who are going to be issued with the chip-based e-passports, and whether it will be violation of individual's right to privacy? So the purpose of issuing e-passports is to make it easier, smoother to travel, and also ensure better security of the data of the passport holder. So what the e-passport has is both the data on the sheet like a regular passport, as well as the data with the photograph on an inlay sheet which is put in the back cover of the passport. Now in terms of the data security, the data is put into the chip through a personalization process, and this of course is then used for a specialized printer to print it. Then there is an establishment of a public key infrastructure which will do a digital signature. That digital signature is of the issuing country. So it's like a certifying authority. There is a company which is specialized which will do this on behalf of Government of India. So that's it from us in this bulletin. Thanks very much for your time.